Namaste learners. In this video, we are to learn would like to. Very useful and polite sentence construction. Before starting teaching, I would like to inform the uses of would like to. Why should we learn, or what are the uses of would like to? Friends, would like to denotes likes, dislikes, पसंद, नापसंद, आवडी निवडी. So that's why would like to denotes likes, dislikes, wishes, desires. Then you can make requests with the help of would like to. You can give offers. So these are the uses of would like to. आप अपनी पसंद, नापसंद विनती कर सकते हो, अपनी इच्छा दर्शा सकते हो, या किसी को कुछ ऑफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वुड लाइक टू. फॉर दैट यू मस्ट नो 4 रूल्स ऑफ वुड लाइक टू. Yes, these 4 rules. Affirmative, so rule should be subject, then would like to, after that first form of verb plus object and remaining part of sentence. Okay. Negative, subject, same, would, and then not. Be conscious. After that, like to, then first form of verb plus object, remaining part of sentence. Okay. Interrogative, would at the beginning. After that, subject, then like to, then V1 plus object, remaining part of sentence, and don't forget to give question mark. Last, interrogative negative, नकारार्थी प्रश्न. At the beginning, would, or you can use wouldn't, directly contraction. Then subject, and if you are using expansion, so after subject, not. Then like to, first form of verb plus object, remaining part of sentence, and question mark. Would like to. Generally our learners, they learn only affirmative rule, but when you are to use negative, interrogative, or interrogative negative rules, that time you must not get any difficulty. That's why I give 4 rules at a time. Means you can translate. For suppose I give affirmative example, you should make negative of that example, interrogative, negative. It is the part of practice. Okay, I will take here 5 examples. You should make your own. What are the uses? Would like to denotes likes, dislikes, desires, wishes, requests, and offers. Okay, so these are uses. काय सांगते would like to? Would like to आपल्या आवडी निवडी, आपल्या इच्छा, कुणाला काही देऊ करणे, ऑफर्स म्हणजे देऊ करणे, विनंती करणे, हे जे काय असेल ते तुम्ही would like to च्या मदतीने सांगू शकता. If you get such types of questions in competitive examination, तर थोडेसे हे मुद्दे लक्षात ठेवा. ओके, पण इथं we are to use it in our day to day life. This is my motto. चला, एक वाक्य बघा. तुम्हाला चहा घ्यायला आवडेल का, असं आपण जनरली बोलतो. क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, असं मी तुम्हाला विचारलं. या क्या आप चाय लेना चाहते हो, या क्या आपको चाय लेना पसंद है, असा प्रश्न विचारला मी. तुम्हाला चहा घ्यायला आवडेल का. आता प्रश्न आहे म्हणल्याच्या नंतर कोणता रूल लावायचा बघा. विच रूल? अफर्मेटिव्ह घेऊ शकतो? नाही. निगेटिव्ह? नाही. इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह?
मग फक्त इंट्रॉगेटिव्ह. बरं, चला करा. कसं होईल वाक्य? वूड, रूल पे नजर. हाँ, वूड सब्जेक्ट, यू, would you, after that like to, काही जण ड्रिंक, काही जण टेक, काही जण हॅव. ओके, नो डाऊट, डोंट वरी, यूज. वुड यू लाईक टू ड्रिंक, वुड यू लाईक टू हॅव, वुड यू लाईक टू टेक. आता तुम्ही असं म्हणाल की सर मराठी में आप बोले तुम्हाला चहा घ्यायला आवडेल का? टी असं जरी म्हटलं तरी इंग्लिशमध्ये अ कप ऑफ टी यू शुड लाईक. A cup of tea. Would you like to have a cup of tea? You should use a cup of tea. Otherwise, in Hindi, in Marathi, generally we do not ask कि क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, ऐसा अपन नहीं बोलते. क्या आप चाय लेंगे? It is our way to ask. Okay? लेकिन अंग्रेजी में a cup of tea we should use. Would you like to have a cup of tea? ओके. नेक्स्ट सेंटेन्स. त्याला इंग्रजी शिकायला आवडते. उसे अंग्रेजी सीखना पसंद है या वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, चाहेगा. असं कैसे करेंगे? यस, अब सेंटेन्स अफर्मेटिव है. ही वुड लाइक टू. यस, he would like to learn English. वो अंग्रेजी सीखना चाहेगा. He would like to learn English. इसका निगेटिव कैसे करेंगे आप? सेंटेंस डायरेक्टली इन इंग्लिश. He निगेटिव would not like to learn English. ओके. अब ये जो मैंने इंट्रोगेटिव दिया, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे करेंगे आप? इंट्रोगेटिव निगेटिव. वुड यू नॉट लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. और अफर्मेटिव कैसे करेंगे? अफर्मेटिव इसका ही फर्स्ट सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस शुड बी यू वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. निगेटिव you would not like to have a cup of tea. Please translate. Suppose I have given sentence in affirmative, you should make remaining 3. If my sentence is an example of interrogative, you should make remaining 3. It is the part of practice. Okay, एक sentence. क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलना पसंद नहीं करेगा? इन मराठी, विराट कोहलीला ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध खेळायला आवडणार नाही का? इंट्रोगेटिव निगेटिव बने. क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव. ओके. यस, मराठीमध्ये विराट कोहलीला ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध, आता तो क्रिकेटच खेळतो, क्रिकेट खेळायला आवडणार नाही का? कैसे करेंगे? फोर्थ रूल. थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, स्लोली. वुड विराट कोहली विराट कोहली not, and suppose contraction, तो contraction में कैसे हो जाएगा सेंटेंस would be would, I am using here Virat Kohli not, and contraction wouldn't. Look, that time here not is not used. Both sentences are correct. Would Virat Kohli not or wouldn't Virat Kohli. ओके. रिमेनिंग सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस करेंगे ना. हाँ, रूल पे नजर. लाइक टू प्ले. अब वो क्रिकेट ही है इसलिए
cricket against versus ऑस्ट्रेलिया इन द ऑस्ट्रेलिया, ऐसा भी आप बोल सकते हो, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द ऑस्ट्रेलिया. ओके, यस. वुड विराट कोहली नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द ऑस्ट्रेलिया? इंटरोगेटिव, नेगेटिव. You must use affirmative, negative, such examples. Okay, it was my third. त्यांना, next sentence, fourth. त्यांना दुसऱ्याला हसायला आवडत नाही, म्हणजे विनोद करणे, थट्टा करणे. त्यांना दुसऱ्यांची थट्टा करणे, मस्करी करणे आवडत नाही, आवडणार नाही. उन्हें दूसरों का मजाक करना पसंद नहीं है, असं मला म्हणायचं. नहीं है, निगेटिव्ह. कैसे करेंगे? निगेटिव्ह, दे वुड नॉट, कॉन्ट्रैक्शन, वुडंट. दे वुडंट लाइक टू जोक, काही जण मेक जोक असं पण घेतात, जोक, जेस्ट others. Look, they wouldn't or they would not like to joke others. मस्करी करना, विनोद करने, थट्टा करने, like this, joke and jest. Affirmative, they would like to joke others. They would like to jest others. Okay, last sentence, that is my fifth example. Yes, आम्हाला समाज सेवा करायला आवडेल. हमें समाज सेवा करना पसंद है. अफर्मेटिव एग्जाम्पल, अफर्मेटिव. या हम समाज सेवा करना चाहेंगे. कसंही करा, सेंस. मराठी हिंदी सेंटेंस सिर्फ मैं आपके मदद के लिए देता हूं. ट्राई टू गेट द सेंस. फोकस इस पे ही होना चाहिए आपका. यस, अफर्मेटिव है. वी वुड लाइक टू, सेवा करने, सर्व द नेशन, सोसाइटी. ओके, यस, सॉरी, अफर्मेटिव है, फुल स्टॉप. ओके, वी वुड लाइक टू सर्व द सोसाइटी, और यू कैन यूज नेशन. वी वुड लाइक टू सर्व द नेशन. ओके, सो I finished here 5 examples. I request you, please try to make your own examples. आवडी, निवडी, इच्छा, आकांक्षा, विनंती, ऑफर्स, देऊ करणे, ह्या गोष्टी with the help of would like to you can indicate. आपकी पसंद, नापसंद जो भी है. तो स्पर्धा परीक्षा में sometimes may be asked कि what are the uses of would like to, या एक आधा सेंटेंस वो दे देंगे कि इसमें ये क्या दर्शा रहा है. तो ये थोड़ा सा आप अपने सॉफ्ट माइंड में रख दीजिए. चारों रूल्स बाजू में लिखते जाइए आप लोग. कुछ भी अगर थोड़ी सी गलती होती है तो यू मे गेट सपोर्ट ऑफ रूल्स. ओके, हियर आई फिनिश्ड वुड लाइक टू. अगेन आई रिमाइंड यू, वेरी यूजफुल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सो ट्राई टू यूज इट. ओके माय फ्रेंड्स, इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, प्लीज कॉमेंट मी. आप अपने वाक्य बनाना मत बंद कर दीजिए. प्लीज प्रैक्टिस इट डेली. एक सेंटेंस आप खुद का बना के मुझे कमेंट में लिख दीजिए. ओके, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.